Hi everyone. Hi students. I hope that you guys are good and welcome back. Okay. So let me see who all are here in the class. Class में कौन है and then I'll start. Okay. Okay. So yeah, just give me 2 minutes. Let me wait for a few more students and then I'll start with today's class. Okay, guys. Hi Sushila. Hi Tarun. Eldin. Okay, I'm good. I'm good, everyone. I'm good. Okay. Let me get my pen and let's start with today's class. So again, in today's class I'm going to start with two questions. Just quickly tell me if my voice is okay and if you can see whatever I'm writing on the screen. Just quickly tell me that. Okay, so today's two questions are: number one is sum of both diagonals of a matrix. Okay, the second question will be uh ma'am, I don't know C plus plus, C plus plus, Java, or Python. So how can I prepare for the tournament? You have to like have a knowledge of like basic knowledge of at least any one of these languages. And today, as you can see, it's 20th January. You still have 6 days. If you will, we are only having like basics. So if you can just like learn some things, we have multiple playlists. Like I have multiple playlists, and we have multiple playlists on school channel. Okay, so you can just go. And one more thing, this like apart from this, we also have 20 quiz questions. So you can, what you can do is you can just try your luck with the quiz questions and try to answer every quiz question correct. Maybe that will also help you. Okay, so Tarun is saying, मैम C++ प्रोजेक्ट को डिजाइन कैसे करते हैं? Tarun, I'm not the right person to ask this because I like don't code in C++. I don't have any idea about C++. I majorly code in Java or Python sometimes, and I have knowledge for full stack, Java backend, and machine learning and data science. Okay, so I'm not the right person to answer this question which you are asking right now. Okay, okay, the next question that we are going to do is that you have given a uh, like in an an AP AP, I guess everyone knows what AP is: arithmetic progression. Okay, progression. Okay, in an AP, what you have to do is you have to find nth term and sum of elements till sum of at least. Okay, let's not go till. Let's do one thing: sum of. Okay, just, I'm so sorry. Sum of m elements. Okay, so quickly tell me that which question you guys want me to start first with. First one or second one? कौन सा वाला पहले करूँ? Okay. 20 quiz questions are on basics of binary representation of number. Okay, and okay, just because I first of all, just please tell me your correct name. I don't know what is it is Thega. It is written Thega. Okay, so I'll just quickly tell you what like everything about the quiz. Okay, and Tarun, in the meanwhile, you are saying that जावा प्रोजेक्ट्स को कैसे डिजाइन करें. आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट सीखना पड़ेगा.
ओके, सबसे पहले स्प्रिंग बूट, आपको फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, कोर जावा सीखनी पड़ेगी, कलेक्शंस वगैरह, एंड देन ओनली यू कैन जस्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू डिजाइन द. Okay, okay. Let's go to the contest page, and here let me quickly tell you about the courses contest. Okay. Okay, I was talking about this by wizard coding tournament. The link will be in the description box only. So basically, the syllabus is that basics of programming, binary representation of a number, loops and searching. So ये syllabus रहेगा, and all of you know that दो coding question रहेंगे, 20 quiz question रहेंगे. The top students will get a chance to win these uh, gifts, which are gaming laptop, iPad. I'm not going to repeat everything again. Just you guys know that only the students from class 8 to 12 will participate, and the top 100 students will get letter of recommendation from CEO of Geeks for Geeks, and will also get free access to all our paid courses. So this was all about the tournament, and let's get back to this. Okay, now let's get back to this. Okay, so okay, your name is Raj. Okay, Rahul is saying first one, and Eldon is saying, can we use formula? Obviously, I'm going to tell you, like for the students who know formula, it's good. If for the students who don't know, I'm going to tell you how you can just like guess the formula, and we are going to use formula only for this. Okay. Okay, so let's start with the first question then, in that case. Okay, so the first question is that we have given a, like we are already given a matrix, and inside this matrix we have to find the sum of diagonal, like both the diagonals of the matrix. So let's just quickly design a matrix first. Okay, so let's just have an array, like 2D array. Okay, first of all you need to understand कि rows और columns same होनी चाहिए तभी. Okay, I don't know what the hell I'm making. It's not looking good at all. Okay, so let me just make it like this: 3, 6, 7, 2. Okay, so this is a 2D matrix. So here we have two diagonals. One is this diagonal. Okay, and another one is this diagonal. Okay, we have two diagonals, so we have to find the sum of this. Let's just make it d1, and this, let's just make this d2. We have to find the sum of d1 and d2. Now this is a very easy question. If you will see a very small thing that let me just explain you. So let's just make this let's just name this 2D array as A. So this is A00, this is A11, this is A22, this is A33. So in this case, to find the basically to find the elements of, see, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि कोई कोई लोग like दो loops चलाएंगे, and they are going to have like, first let me just write this. Okay, A of 30, A of 2, 1, A of 2, 2. Okay, wait, it is, okay, I'm sorry, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने. This is element A of first row and second column, 1, 2. This is A of second row and first column. Okay, 2, 1. And this is A of 0, like third row and 0th column. And this is ये मैंने उल्टा कर दिया, this is 0th row and third column. Cool. Now indexes are similar. Yes, I know it's very easy. I'm not going on very high level because जो tournament में questions आएंगे
मैं वही पढ़ाऊँगी आपको। बहुत हाई लेवल अगर आपको पढ़ना है तो आप फर्स्ट स्टेप टू डीएसए वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं दैट आर वेरी लाइक हाई लेवल क्वेश्चन। ओके, सो यस, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दो फॉर लूप चलाएंगे। एक फॉर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस, राइट। एंड इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, राइट। एंड यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर लोगे कि जब आई इक्वल इक्वल जे होगा, इफ, तो आप क्या करोगे, आप D1 में इक्वल D1 प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे कर दोगे। इससे आपकी D1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे आप एक और चीज करोगे फॉर D2 व्हाट यू विल डू इज इफ फॉर D2 आप ये एलिमेंट्स निकालोगे। बेसिकली आप एक कंडीशन लगाओगे दैट आई प्लस जे, इफ आई प्लस जे इक्वल्स टू एन, if I plus j equals to n minus 1, अगर I or you can do is if I plus j plus 1 equals to n. So for this condition you are going to do d2 plus equals to a of ij, right. Usually D1 D2 के लिए लोग इसी तरीके से करते हैं एंड वी कैन ऑब्वियसली डू दिस, बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n। क्या इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और क्विकली टेल मी गाइस दैट क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इफ एनीवन हैज एनी आइडिया कि इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द चैट। जल्दी से मुझे बता दो अगर इसको और ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, अदरवाइज आई विल टेल यू। ये O ऑफ सॉरी बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ये बिग O ऑफ n स्क्वायर इफ n इज द साइज लाइक n इंटू, अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। एग्री और नॉट एग्री, एंड इफ यू एग्री कैन यू ऑप्टिमाइज दिस solution or not? Okay, Rahul is saying this, yes he can optimize. What about others, quickly tell me. What about others, आप लोग ऑप्टिमाइज कर पाओगे इसको या नहीं? If no, just quickly write so that I can move ahead and I can explain the optimized solution. Yes. Anonymous. I hope I'm pronouncing your name right. Or if this is not your name, just tell me your real name. And yes, O of n can be done. Correct. O of n में हम कर सकते हैं इसको. Okay. So let's do one thing. Let me just write that. Let me make a matrix over here. And इस बार मैं 3 क्रॉस 3 की बनाती हूँ. 3 2 1 1 2 3 and 1 2 1 3 4 3 1. Okay, ये एक मैट्रिक्स है. Okay, and the elements are like this. This is A of 0 0. This is A of 1 1, and this is A of 2 2 2, right? And this is A of 0th row and second column, and this is again A of 1 1. Okay, and this is A of second row and 0th column. Okay, instead of traversing the whole matrix, yes we can just using one loop we can do this, and then we can just traverse one. Okay, so let me tell you how that can be done. So you can just traverse one for int I equals to 0, I is लेस देन, अगर आज की क्वेश्चन ईजी है जस्ट राइट मी इन द चैट सेक्शन. नेक्स्ट क्लास में थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन, लाइक टुमारोज क्लास आई विल फाइंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड आई विल लाइक डू दैट. एंड अगर आप लोगों के माइंड में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो स्कूल लेवल का हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका जो लिंक है ना वो कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल सी दैट इफ आई फाइंड दैट स्कूल लेवल का, आई डेफिनेटली I'll definitely do that in the next class. आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन. ओके, कूल.
cool. I want you guys to participate. Like it gets really difficult for me कि हर class में I have to find two questions, different questions, and जिसमें सारी like नई approach हो. Now, just one more thing, guys. Do you want me to revise searching and sorting की जितनी भी algorithms हैं हमारी? You want me to revise them? एक class क्या इन पे भी लेनी है? सर्चिंग और सॉर्टिंग की भी की एक क्लास लेनी है या नहीं? अगर लाइक इफ यू गाइज वांट, जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन. अगर मेजोरिटी बच्चे चाहेंगे, सो वी कैन हैव अ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की एक डेडिकेटेड क्लास जिसमें दोनों सर्चिंग टेक्निक्स एंड 3 O of n स्क्वायर वाली एंड 2 n log n वाली आई विल टीच. वैसे n log n वाली नहीं आएगी बिकॉज रिकर्शन सिलेबस में नहीं है, but still if you guys want I can. Okay. Yes, no में मैं समझ नहीं पाऊंगी. Please write yes searching sorting if you want, and if you don't want, write no searching sorting, so that we can do. Okay. Now, so for D1, this was our D1. ये हमारा D1 था, ये हमारा D1 था, and ये हमारा D2 था, right? For D1, what we are going to do is D1 plus equals to, what we are going to do is ARR of I. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? बेसिकली 0 0 A 0 0 हमें मिल जाएगा यहाँ से, A 1 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, A 2 2 यहाँ से हमें मिल जाएगा. एल्डेन, अगर आपको सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़नी है ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि गीक्स फॉर गीक्स के चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओ. फर्स्ट स्टेप टू डीएसए में जितनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है मैंने सब पढ़ाई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स वहां पे पढ़ाई हैं. तो प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, सो दैट आपकी ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. इवन दो आई विल टीच यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, दैट्स इट. मैं आपको रेडिक्स सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, बकेट सॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज वो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न दैट, जस्ट गो ओवर देयर. ओके. Okay, ma'am, only computer questions. It is must to learn all sorting algorithms. Yes, it is very important to learn all the sorting algorithms. Searching, sorting is needed. Yes, which type of questions? Okay, जो questions मैं करा रही हूँ, अगर आपको इससे better कोई questions आपके mind में आते हैं जो आप चाहते हो कि मैं solve कराऊँ, तो just write in the उसका link आप comment section में डाल देना, so that I can go through that, and if I feel कि वो level का है तो I will add that. Okay. I don't think so merge sort, quick sort और heap sort आएगा, because why I think so is कि merge sort, quick sort, merge sort में basically इनमें recursion आ जाता है, recursion हमारे syllabus में नहीं है, स्कूल्स में रिकर्शन नहीं पढ़ाया जाता है. दैट्स वाई आई गेस रिकर्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा. अगर रिकर्शन से रिलेटेड आता तो मैं आपको जीसीडी भी पढ़ा देती, जीसीडी एल्गोरिथम, जीसीडी की यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी पढ़ा देती, बट आई डोंट थिंक सो कि रिकर्शन से कुछ भी आएगा. दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग दिस. ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बता देती, और टावर ऑफ हेनोई भी मैं फिर से बता देती. ओके मंगेज, हाउ टू पार्टिसिपेट, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टूर्नामेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो ऑन गीक्स फॉर गीक्स पेज एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट. लास्ट तक रहना, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कहाँ पे है वो, एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड रजिस्टर फॉर योरसेल्फ. इट्स फ्री एंड बेसिक, उस वहीं पे आपका सिलेबस भी लिखा है. बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस दो आएंगे, 20 क्विज क्वेश्चंस आएंगे, सारा सिलेबस वहीं दे रखा है. आई एम गोइंग टू, मैम सॉर्टिंग सिलेबस में नहीं है, ओनली सर्चिंग. हाँ, सॉर्टिंग नहीं है सिलेबस में, बट इफ आई लाइक एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे स्कूल में सॉर्टिंग हमें 11th 12th में पढ़ाई गई थी. सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, इवन सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट 10th में पढ़ाया गया था हमें. सो आई डोंट नो इफ दैट कैन कम, बिकॉज द 8th to 12th स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, तो इट माइट बी द कंडीशन की सॉर्टिंग आ सकती है. आई एम जस्ट सेइंग. let's do D2 का भी. D2 is equals to, for D2 what you can do is कि आप एक चीज नोटिस करो. सी,
if I will write this ARR of I and n minus 1 minus I, इज दिस इज करेक्ट? सी, आपका पहला एलिमेंट क्या है? 0 2, आई की वैल्यू 0 एंड एन की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 0, राइट? So 2. For next iteration your I की value is 1, right? So your I is 1 and n is 3. 3 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1. So you will get this element. And if you will talk about this element 4, then again I की value is 2 and n की value is 3. 3 minus 1 is 2, 2 minus 2 is 0. So you will get this element. So with the help of this loop you can easily do the sum, and the time complexity of this will be big O of n. ओनली कोडिंग मंगेश, ओनली कोडिंग ही आएगी, एंड जो क्विज क्वेश्चंस होंगे उसका भी सिलेबस आपका लूप्स, एरेज, सर्चिंग एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सो इसी में से आएगा, ठीक है? सो राहुल, मैं आईसीएसई स्कूल से पढ़ी हूँ, ओके, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से। सो मैं आईसीएसई से पढ़ी हूँ। सो हमारे में 9th से जावा थी जब मैंने स्कूल किया था, एंड 10th में हमें सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ा दी गई थी जावा में, ओके। एंड आई गेस आईसीएसई में अभी भी यही चलता है, ओके, कूल। सो यस, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Do you guys want me to code? Okay, let's just code it together. You guys also open the ID, Geeks for Geeks की ID open कर लो, या कोई भी online editor open कर लो, and let's just code it together so that if anyone faces any doubt, किसी को कहीं कोई problem आती है, तो you guys can ask me अभी के अभी, okay? Just open the code editors, ठीक है? हम यहाँ पे एक array बनाते हैं, int square is equals to new int. Okay, let me not do this, let me just initialize it, and इसके अंदर again I'll have 1 2 3 4, okay, not like this, 1 3 9 4 9, okay. Then I will have another row. In this I will again 4 9 7 8, okay. And then I will have another row, okay, 6 3 4 9, and then I will have another row, and here what I'm going to do is 5 6 3 8. मैं कुछ भी नंबर्स ले रही हूँ अपने हिसाब से, so you guys can do the same, okay. And int n को मैं arr dot, ठीक है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए, ओके। Elden, I'm from Agra, UP. Okay, so let's focus on the code first, and then you guys can ask me these questions in the comment section. I will answer over there only, ठीक है। अभी कोड पे फोकस करते हैं। For int I is equals to 0, I is less than n and I plus plus. Let me do one thing, हम d1 d2 को इनिशियलाइज कर देते हैं। int d1 equal to 0 and d2 equal to 0. Okay, cool. Now here I just have to do sum. So d1 plus equals to, हमने क्या किया था, arr of I and I, right? किसी को कोई डाउट हो तो you guys can ask. And d2 plus equals to arr of I and space. Okay, for this it is n minus 1 minus I. Okay, cool, ठीक है। And then after this you can just print d1, and then after giving a space you can just print d2. Cool.
आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा. लेट्स जस्ट रन दिस एंड लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट. Okay, I just forgot a comma over here. Okay. So you can see D1 is 18 and D2 is 24. You guys can just use the same inputs and you guys can check if it is like the output is correct for you all or not. The answer is 18 and 24. Okay. Just इन्हीं input को check करके आप एक बार check कर लो आपका answer सही आ रहा है या नहीं. Now let's talk about the next question, which is nth term of AP and sum of AP. Now for here just assume, just let's just assume कि फर्स्ट टर्म जो है, जो फर्स्ट टर्म एपी हमारी कुछ ऐसी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है, मैं बोल रही हूं कि मुझे 10th टर्म चाहिए एंड 20 एलिमेंट्स का सम चाहिए. Sum of 20 elements, 10th term and sum of 20 elements. Now can anyone tell me for nth term what is the formula of AP for nth term and what is the formula to find the sum of like any elements like this? Just suppose this is M, just suppose this is N. So generalized formula to find nth term and sum of M terms, M elements. Okay, so yes, Alan has said it correctly. The nth term can be found by a n minus 1 into d. So here a is the first element. A हमारा क्या होता है? First element. D क्या होता है? D is the common difference. If you will see second minus 1, second element क्या है? Third. 3 minus 1, तो common difference क्या आ गया? 2. Now again if you will next दो elements को check करोगे तो 5 minus 3 is 2. If you will check again तो 7 minus 5 is 2. So you can see कि हर दो elements के बीच में difference कितना है? 2 का. Okay, now okay, so yeah, so basically here you can see to find the nth term of AP we have this formula, first term plus n minus 1 into d. Okay, this is the formula to find the nth term of AP. Now to find the sum of m terms of AP, so the sum is okay, someone has already said n into 2a plus n minus 1 into d and whole divided by 2. Yes, n की जगह हम m कर दे रहे हैं यहाँ पे because we have taken m. Okay, so basically okay, cool. So basically this is the formula to find the sum of AP. Okay, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका जीपी के लिए भी आ सकता है. Now if you know about AP, so I want you guys to quickly tell me in the chat section that what is a GP and GP का nth term find कैसे कर सकते हैं? nth term and sum of n elements. इसी तरीके से आपका जीपी में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो जस्ट क्विकली टेल मी जीपी क्या होती है, जीपी का nth टर्म कैसे निकलता है एंड जीपी का n एलिमेंट्स का सम कैसे निकलता है. क्विकली टेल मी गाइस. Cool. So yeah. Okay, some people are answering it. Okay, geometric progression forgot formula दो. Okay, nth term AR to the power n minus 1. Yes, nth term of GP होता है हमारा AR raised to the power n minus 1, where R is the common ratio इस केस में. ठीक है, common ratio. And sum होता है हमारा. Okay, let me just erase this first. For GP, the formula for sum is okay,
a into r raised to the power n minus वन अपॉन यहाँ पे वन माइनस आर भी हो सकता है, आर माइनस वन भी हो सकता है, या आप ऐसे कर लो वन माइनस आर. ओके ओके, सो बेसिकली ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, द मेन थिंग इज. ठीक है, हाँ, वन माइनस आर, आर माइनस वन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. बेसिकली वन माइनस आर, आर माइनस वन इस पे डिपेंड करता है आपका. आप इसका फॉर्मूला दो तरीके से लिख सकते हो. ओके, इसका फॉर्मूला दो तरीके से लिख सकते हो. एक तो ये तरीका है जो मैंने लिखा हुआ है आर माइनस वन. दिस इज फॉर द केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन. ठीक है, नाउ इफ आर इज लेस देन वन, इन दैट केस द फॉर्मूला विल चेंज and the new formula will be a 1 minus r is to the power n minus 1 upon 1 minus r. ठीक है, for this case the formula will be this. ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ इट इज क्वाइट सिंपल. अब तो क्वाइट सिंपल है ये कि, और आपको इतनी बड़ी जीपी नहीं दे रखी होगी, आपको सिर्फ बोला होगा कि फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म जो है वो वन है एंड सेकेंड टर्म जो है वो थ्री है, एंड यू हैव टू फाइंड टेंथ टर्म. आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके दे रखा होगा, देयर इज अ सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म इज वन, सेकेंड टर्म इज थ्री, एंड you have to find 10th term and sum of 20 elements. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन देखना दे रखा होगा. तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है टू का. मे बी ऐसे भी हो सकता है कि आपको थर्ड भी दे रखा हो सेवन, थर्ड भी दे रखा हो फाइव, सो दैट आप समझ जाओगे कि कॉमन डिफरेंस टू है. अदरवाइज आपको मेंशन होगा कि ये एक एपी है. ठीक है, या तो मेंशन होगा एपी है तब दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखा होगा, या तो फिर वो तीन टर्म दे देंगे, वो आपसे एज्यूम कर लेंगे कि आप खुद ये समझ जाओ कि ये एक एपी की बात कर रहे हैं. ठीक है, कूल. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इट्स वेरी बेसिक, बिल्कुल मैथ्स का क्वेश्चन है. आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका काम हो गया. ओके, सो हियर द फर्स्ट टर्म इज okay, int f is equals to 1 and int s is equals to सेकेंड हमारा है 3. ओके, लेट्स मेक इट 4. ठीक है, मैं कॉमन डिफरेंस चेंज कर दे रही हूँ. तो यहाँ से मैं int d निकाल लूंगी. अपना d कितना होगा, s माइनस एफ. ओके, कूल. ना आपके पास d आ गया, आपके पास f, आपके पास फर्स्ट टर्म को आप a भी समझ सकते हो, f भी समझ सकते हो. ठीक है, फॉर द ईज ऑफ द फॉर्मूला मैं इसको a समझ ले रही हूँ, इसको d समझ ले रही हूँ. इंट हमें n कितना निकालना है, n इज इक्वल्स टू 10. हमें टेंथ टर्म निकालना है. ओके, ना आवर टेंथ टर्म इज आवर टर्म, इंट टर्म इज, जो भी हमें टर्म निकालना है, इक्वल टू a प्लस ओके n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, इससे मेरा nth टर्म निकल आएगा. एंड सम निकालने के लिए अगेन सम इज इक्वल्स टू n by 2. okay, let's just do this n by 2. okay, n into let's do this way, 2 into a plus again bracket n minus 1 and into d and whole divide by 2. ओके, एंड इसके बाद आप टर्म प्रिंट कर दो एंड उसके बाद आप सम प्रिंट कर दो. ओके, कूल, क्वाइट इजी, बहुत इजी था ये. आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी.
Obviously I'll bring a little bit tough questions in next class. Okay, it's minus. Okay, cool. And yes, the time complexity is big O of 1 because ये सारी जो भी operations हो रहे हैं ये सब constant time लेंगे. Okay, so yeah, so yeah, that's it for today's class. And Elden, अगर आप चाह रहे हो कि मैं tough questions लेके आऊँ, so I would expect कि आप comment section में कुछ tough questions आपको जो भी समझ में आ रहे हो उनको चाहे लिख दो, चाहे उनका link कहीं से दे दो. Okay, and for the students who want to know a little bit more about BioWizard coding tournament, I'm going to tell you, and who are going to leave right now, please like the video because it takes a lot of effort for me to like come daily and teach you all this, and I'm just wanting you guys to perform really good in the tournament. Okay, yeah. So for the students who want to know can stay, and who don't want to can leave. Just please like the video and share it with your friends so that everyone can participate. So yes, we are going to organize a BioWizard school coding tournament that is on 26th of December, 26th of January. Okay, we will have 22 questions where 20 questions will be quiz questions and 2 questions will be coding questions. There you will have 90 minutes to solve them, and you can win prizes up to 5 lakhs, and this is exclusively for students, school students. The prizes will be like the top 5 prizes will be gaming laptop, ipad air, Bose headphones, smart tablets and smart bands. Okay, and not only this, not only top 5 students will like win rewards, the top 100 students will receive a letter of recommendation, which is very helpful in future. आप कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो that will be really helpful in your resume कि आपने इतनी young age में इतने like कितने Geeks for Geeks is a very big कंपनी स्टार्टअप, आपने वहाँ के सीईओ का लेटर रिकमेंडेशन आपके पास रहेगा. एंड नॉट ओनली दिस, यू विल ऑल्सो गेट फ्री एक्सेस टू ऑल द पेड कोर्सेज दैट वी हैव ऑन Geeks for Geeks School. Okay, this is recommended for students from class 8th to 12th. It is written recommended for them and participate, like I guess other school students can also participate. अगर आप 7th class में हो तो आप participate कर सकते हो on your risk. Maybe आपको questions बहुत difficult लगे. There is one more thing that you need to see, that is कि if from your school 50 or 50 plus students will participate, then in that case the top 3 performers of your school, आपके स्कूल के जो भी top 3 performers होंगे, मे बी वो top 100 में हो ना हो, जो भी हो, जो भी top 3 students होंगे, they will get a chance to win tablet, wireless earphones and smart bands. Okay, so you guys can ask your friends and schoolmates to also participate, and the contest is exclusively for school students, and every student who will win, they have to undergo verification via video call. Okay, and other like verifications also. The syllabus is basic of programming, binary representation of a number, loops and searching, and they will be plagiarism check, so don't try and cheat. And if you will do any wrong summation, 5% penalty will be charged. And you guys can also use hints, वहाँ पे hints भी दे रखे होंगे, but there will definitely be deduction of marks on using hints. And languages जो supported हैं वो हैं C++, Java, Python. And yeah, that's it. And one more thing, if you want to start learning for the other tournaments, and let me tell you कि भले ही आपने आज like participate नहीं कर पा रहे हो, आपको हम हर दूसरे तीसरे में हम like अब बहुत frequently ऐसे tournaments कराएंगे for school students. So it's high time for you to start learning all these things, and you can refer to the school guide का link यहाँ दे रखा है हमारे पेज पे. So ये school guide एकदम free है for all the students, and यहाँ पे multiple class के students इससे पढ़ सकते हैं, class 1st to 4th. For them we have computational thinking with Scratch. Class 5th to 8th we have create games in GitLabs, web lab projects, machine learning using Scratch, real world apps in App Lab. And for people from class 9 to 12th, for now we have C for beginners and Java for beginners, and we are also planning to add few more things in these sections. For example, for 9 to 12th we are planning to add HTML, Python also. So please go and do register for this course, because if you will register for this course, you will get a chance to learn a lot of things, and all of this is free of cost. Okay, so this will definitely going to help you, benefit you. Okay, so that's it for today's class. If you guys have any doubts, just quickly ask, and then I'll just end the class. Okay,
The topics that you need to study for 20 questions are basically वेरी सिंपल टॉपिक्स. जो कुछ भी आपको कोडिंग में पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट? कि जैसे कल मैंने एक पैटर्न कराया था, वो एक पैटर्न दे दिया एंड दे विल आस्क कि कितने नंबर ऑफ फॉर लूप्स इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, तो उसमें मिनिमम 4 फॉर लूप्स रिक्वायर्ड थे. तो इस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जस्ट गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, ऑन 25th of January आई विल हैव अ मेगा मेंटी क्विज. मैं एक मेगा मेंटी क्विज करूंगी जिसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे. सो प्लीज डू कम ऑन दैट मेंटी क्विज ऑल्सो. उस मेंटी क्विज को जरूर अटेंड करना, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? एंड इसी सबसे बेसिकली इंट का, लाइक इंट किस तरीके के इंट क्या स्टोर करता है, तो इंटीजर स्टोर करता है. ओके, डबल क्या स्टोर करता है, डबल आपका डेसिमल नंबर स्टोर करता है. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस. ओके, okay, so yeah, that's it for today's class. Okay students, I'll see you next time. Bye bye everyone. Bye.